Item 49, Shri Pratik Singh Thakur, Shri Avinash Singh, AG. It is a matter where they are not conducting the counselling, although 2,300 posts are vacant, and on 1/7/2025 the list will expire, my lord. Yeah, yes, Mr. Such special circumstances there, the time has extended for the fifth round counselling. The number of petitions filed, ultimately the BEd students are based employees. जो भी है इनके स्थिति ये थी कि पिटिशंस फाइल हुए, बीएड के कैंडिडेट को बाहर किया गया, उसके फाइनल डिसीजन लिया गया कि जितने पोस्ट वैकेंट हैं 28 तारीख की एक फिफ्थ राउंड काउंसलिंग प्रोसीजर ड्राफ्ट की जाएगी, जिनकी लास्ट डेट टाइम टू टाइम एक्सटेंड होते गए बिकॉज द फाइलिंग द रिट पिटिशंस अल्टीमेटली दैट हैज बीन रिकॉर्ड ओनली द फिफ्थ राउंड काउंसलिंग. There is no proposal for further counseling. No, it is not like that. Page number 71. Though this time has been extended to up to July, but that has been taken decision due to filing of the writ petitions. Yeah, before this honorable court for the participation of the counseling process. Number of petitions filed, and finally 28 एक sent letter. 52 candidates found as a primarily preliminary eligible. That's why rest of the candidates. 6,021 students there for counseling process. The time has been framed to the up to July, but there is no proposal for conducting the 6th and 7th round counseling. This procedure for the completing the 5th round counseling, this the time has been given. Based on anomaly, the procedure anomaly there due to filing the petitions for DEd students. The time has been extended. Page number 71 में भी see what they are saying. ये मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ ना, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि जुलाई तक ही टाइम एक्सटेंड हुआ है, लेकिन वो जुलाई वो फॉर प्रिकॉशन जस्ट टू why not fill up the post? The question is this: 2300 पोस्ट अगर खाली है तो why will not fill up? क्योंकि बीएड वाले बाहर हो गए तो रैंक नीचे हो गया. 70 page number 71 my lord. They are saying that it is only for the accommodating the DEd candidates. It is mentioned, my lord, मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 22/1/2025 को सीधी भर्ती सो एंड सो सहायक सूची में वैधता अवधि में वृद्धि किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय whether this will for him also they say 2025 not only the petitioner is given, other candidate also come forward if I am declaring the 6th round counseling. Another merit list prepared. So many burdens it has been extended first July 2020. जुलाई जो इनकी पिटिशन जो 5th राउंड काउंसलिंग में काफी पिटिशंस आने शुरू है, इसलिए उनको एक प्रिकॉशन मैनेजमेंट की वो पिटिशंस में जितने बच्चे आते हैं स्टूडेंट आते हैं वो डिबार ना हो, और कंप्लायंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर द टाइम that has been extended. There is a precaution manager, the time has been left 1 July. But it is not a procedure for it is not like that. I'll explain that. We filed the affidavit also, reply with kindly given time. I'll explain. July is not like that. July तक तो है ना, अभी जुलाई तक है, मैं जून में फाइल कर लीजिए first week of June. मतलब मैं see I have filed an interim application also, yeah. This letter may be seen. The director who is the appointing authority, he has sought instructions from the secretary that 1316 posts as well as 984 posts. There total 2300 posts are vacant. Now whether should I continue for the 6th round of counseling or not? Now they say जो ये 5th round of counseling थी, it is for those BEd candidates जो कि BEd लोग के बाहर होने से insert हुआ. Their number is 2163. उनके लिए काउंसलिंग था. अब वो in the month of March that is over. Now the validity of the select list is for up to July 2025. Now why you have to give a reason for that. It's a direct Supreme Court on this point, my lord, 2019, that there is a huge unemployment in our country and you have to cite a reason, non-arbitrary reason and a legal reason why you will not fill up the post. दूसरी तो इनको एफिडेविट मांगने की बताओ. Yes. हमें अगर ये काउंसलिंग स्टार्ट कर दे, अपॉइंटमेंट में नॉट बी इशूड बिकॉज बहुत लंबा प्रोसेस है और ये लोग बुलाते हैं 1:1 के. Once he is making some objection, can I prohibit them?
The whole issue is that फाइल electricals file एफिडेविट अब फाइल कितने दिन में करोगे फाइल विद इन 15 डेज अब अगर बीच में होगा वैकेशन में मेंशन कर दीजिए क्योंकि ये पूरे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इतना ज्यादा है. डॉक्टर अजीत सिंह फॉर द all the respondents. But submissions will be recorded, my lord. Please. मान लीजिए पहले Respondent, ऑल द रेस्पोंडेंट ना respondent 3. respondent 6 15 days time to file reply the affidavit yes learned counsel for the petitioner submits that the counseling period has been extended. The validity of select list. my The lord. validity of the select list has been extended till July 1st of July, 2020, July 2025. 25. However, the respondents are not proceeding for the counseling process and the petitioners are being deprived. एक ही petitioner है क्या? The petitioners, More than one. petitioners are being deprived from 9 petitions. My lord, getting yes, selected, getting appointment order appointment. in spite of the fact that their names are found placed at in the select list. Look, The petitioners approach merit list, merit list. Merit list, merit list, combined merit list बनी है. combined merit list. है ना? The petitioner may make special mention of the case during vacation after filing of the affidavit of the ivory affidavit. तो अगर 2300 Item है तो 50. उसमें कम से कम 1 महीना लग जाएगा. हम्म? 2300 लोगों को अगर लेना है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि पहले जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको कुछ बुलाते हैं. फाइल नहीं किया ना फाइल आप एफिडेविट फाइल कर देना था. और अगर 1:3 में बुलाते हैं, 1:1 में बुलाते हैं और कई इनवैलिड हो जाते हैं, फिर वही पोस्ट वैकेंट हो जाता अभी है. कुछ कर देंगे फिर बाद में आ जाएगा कि ये कंसीडर नहीं हुआ वो नहीं हुआ आने दीजिए. Item 50, Sri Manoj Pranjape, Sri Sasank Thakur, AG.